Morning, my dear students. So today we are going to start with basics of partnership. We are going to enter into a new part, and in this part we are going to learn about the partnership. Okay, we have come across the first part, that is NPO, accounting for not for profit earning organization, and we have successfully completed it. Now we are going to move ahead with partnership, where we are going to learn thoroughly about all the concepts of partnership, right from the basic, that is the fundamental. Then we'll move to the treatment of goodwill, and then again with the change in profit sharing ratio, again we'll go with the admission, retirement, death, dissolution, all the parts of the partnership we are going to see. And this part comprises of 30 marks. Okay, so let's start. We are going to go with the basics of partnership first. That is the fundamentals of partnership. Okay. So today we are going to take the accounting for partnership, that is a basic concepts, or you can even say the fundamentals of partnership. Okay, so we'll be learning about what is partnership first, the conception. Already you are aware of that, right? पिछले बार भी तुम लोगों ने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में. दैट इज पार्टनरशिप. क्या होता है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं. वो लंबे टाइम के लिए हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई पर्पस के लिए हो सकता है, वॉलंटरीली हो सकता है. इट कैन बी फॉर एनी रीजन. But when two or more than two person join together to do any business activity, we call it partnership. Remember that the minimum number of members are 2, whereas the maximum is 50. Okay, according to Companies Act 2013, the maximum number is 50, and in case of banking it should be maximum is 20. ठीक है, पहले मैक्सिमम 20 था और बैंकिंग में 10 था. अब क्या है, बैंकिंग में 20 हो गया है और कोई भी अदर बिजनेस में 50 हो चुका है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. तो याद रखना बच्चों. नेक्स्ट, the features and all, you are all aware of that. That is, there should be 2 or more than 2%, right? And another thing is that agreement. The agreement should be there among the partners. तो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, राइट? तो पार्टनरशिप डीड एक होना चाहिए. जनरली बिजनेस करने के लिए होता है और म्यूचुअल कॉपरेशन से होता है. ठीक है, और सब आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लाइबिलिटी शेयर करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे. ये सब चीजों से पार्टनरशिप बनता है. ओके, सो बेसिकली द पार्टनरशिप रन्स ऑन वन particular document or one very significant document, and the name of the document is पार्टनरशिप डीड. ठीक है, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक्चुअली ऑरल या फिर रिटन एग्रीमेंट होता है. ठीक है, या एक ऐसा बोल सकते हो कि सीधा भाषा में एक ऐसा पन्ना या पेज जिसमें लिखा होता है कि कौन सा पार्टनर क्या करेगा, कौन सा पार्टनर को क्या मिलेगा, कौन सा पार्टनर क्या देगा बिजनेस को, कौन सा पार्टनर कौन सा काम करेगा. ये सब चीजों का डिटेल्स रहता है. ठीक है, in simple words, partnership deed is a document which contains the details of the working of the partnership firm. कैसे काम करेंगे हम लोग बिजनेस में, कौन पार्टनर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल्स रहता है. ठीक है, विद स्टैम्प. क्लियर है? तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेन करता है? पार्टनर का डिटेल्स रहेगा, नेम, एड्रेस, सब कुछ, कौन कौन पार्टनर है, क्या बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब कैसे होगा, लॉस कैसे बेयर किया जाएगा, सेटलमेंट कैसे करोगे अकाउंट, अगर कभी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, डिसोल्यूशन होता है, कैसे अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा. एवरी डिटेल इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड. दैट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एक ही होता है. ठीक है, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो, मैंने जैसे पहले बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड होता है ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. सो इन इंडिया it can be oral also, it can be written also, but there are many countries where you have to have the partnership deed in written form. But in India it can be oral also and written also. So what you have to do is that you have to be very careful while making up the partnership deed. अगर तुम्हें पार्टनरशिप में जाना है किसी पार्टनर के साथ, कोई दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि रिटर्न कर लो, कोई झमेला नहीं है. लेकिन अब अगर कोई बोलेगा कि
मैंने तो और ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड कर लिया है और वो ओरल था, हमारे बीच में डिसीजन हो चुका है। अब क्या हुआ है सर, कोई प्रॉब्लम हो गया है, मेरा जो फ्रेंड था जिससे मैंने पार्टनरशिप डीड किया था, अब वो बंदा मना कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था वैसे था। ठीक है, हो सकता है पहले बोला होगा कि प्रॉफिट इक्वली लेंगे, अब बोल रहा है नहीं प्रॉफिट इक्वली नहीं, मैं ज्यादा लूंगा तुम ज्यादा कम लोगे। हो सकता है कि पहले बोला था कि मैं सैलरी लूंगा तुम सैलरी नहीं लोगे, अब बोल रहा है कि किसी को सैलरी नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। लाइक पहले बोलता था कमीशन नहीं दिया जाएगा किसी को, अब उसको कमीशन चाहिए, या एनीथिंग। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब बोल रहा है कि नहीं 2:1 नहीं, उसको ज्यादा मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए 5 और मुझे मिलना चाहिए 1, 5:1। सो there can be many problems that can arise in the absence of partnership deed or in the absence of valid partnership deed। तो अगर प्रूव नहीं कर पाए कि पार्टनरशिप डीड है, लाइक ऑरली कर दिया तुमने, या फिर ऐसा कोई रिटर्न पेपर में किया था जिसका कोई मतलब स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हिसाब से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं यहाँ पे मेरा सिग्नेचर नहीं है, मेरा सील नहीं है, कहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करें। सो कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, कोई ऐसे पेपर में लिख दिए। सो दैट in the presence of any such case which makes that there is no proper evidence नहीं है कि तुम्हारा पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो इन ऑल दैट केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट में जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो जब कोर्ट में जाओगे ना सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, कोर्ट बोलेगा देखो भाई तुम्हारे पास अगर प्रूफ है तो दिखाओ, वरना मैं अपना किताब निकाल के हिसाब करूंगा। तो तुम लोग भरपूर कोशिश करोगे अपना अपना साइड से प्रूफ दिखाना, लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या करेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का किताब निकालेगा और देखेगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। What are the things written in that partnership act about the dealing with the situation like this? In that means क्या situation है? The situation is like this, that the part in the absence of partnership deed, how the dispute can be settled। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये जो डिस्प्यूट हुआ है उसको कैसे सेटल किया जाए। ठीक है, तो एकदम आसान बात है, समझो। दो चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, पहला बात ये कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इक्वली होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। ठीक है, ऐसे करके शेयर करना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर ने अगर लोन दिया है बिजनेस को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, दैट इज फॉरवर्डेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, तो उसके ऊपर क्या करना है, 6% इंटरेस्ट पर एनम बाय डिफॉल्ट देना ही देना है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी तुम्हें 6% इंटरेस्ट पर एनम पार्टनर को देना ही पड़ेगा। ओके, अगर ऑलरेडी डीड है देन दैट इज ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर डीड नहीं है या प्रूव नहीं है तब। ठीक है, सो ये दो चीजें याद रखना है, पहली बात ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, और दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, मत भूलना पर एनम लिखना। ठीक है, पर एनम दिया जाएगा 6% पर एनम। क्लियर है, और इसे छोड़कर बाकी कुछ भी ना हम लोग पार्टनर से लेंगे ना हम पार्टनर को देंगे। लाइक वी विल नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। और हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से नहीं लेंगे। ड्रॉइंग्स कौन करता है, पार्टनर, तो इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देगा, क्योंकि वो पैसा बिजनेस से लेके जा रहा है। सो इसी के लिए जो पैसा मालिक लेके जा रहा है बिजनेस से, या सामान लेके जा रहा है, उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो तुम उसको दाबी नहीं कर सकते कि नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या प्रूव नहीं है इंटरेस्ट का। ठीक है, हो सकता है पहले तुम लोगों का एग्रीमेंट हुआ हो ऑरली तुम लोगों ने डिसाइड किया हो, लेकिन अब प्रूव नहीं है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लोगे। ना ही तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दोगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लोगे। ठीक है, और कोई भी सैलरी कमीशन जैसा कुछ भी हम लोग किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, और सारे पार्टनर्स इन दिस केस क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी सब मिल बांट के शेयर करेंगे। ठीक है, कैरी सारे बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करेंगे सब मिलकर। क्लियर है, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एक उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फार्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इन द
absence of or in the when partnership agreement is silent in the following matter. अगर partnership agreement silent है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करना है इन सारे सिचुएशन के साथ? देखो बच्चों, ये ऐसा सिचुएशन का क्वेश्चन 1 मार्क का आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसी के लिए इग्नोर मत करना। और अभी तो ऐसा हो गया है कि 20 मार्क्स के 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? सो अच्छे से समझो। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जिसको हमेशा एक्टिवली बिजनेस में पार्ट लेना है और पार्ट लेता है, ठीक है? तो जनरली उसको सैलरी दिया जाता है। लेकिन हमारे पास क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। तो क्या हुआ कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर, सैलरी मांग रहा है, देंगे? नहीं, we will not give him. No, we will not give. Why? The reason is that in the absence of partnership agreement, partners are not given salary. ठीक है? Next, Sham has advanced a loan to the farm. He claims an interest at the rate 10% per annum. ठीक है? शाम ने क्या किया है? लोन दिया है फार्म को और अभी 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। क्या करना है? तुम लोग क्या करोगे? सीधा बोलोगे नहीं भाई 10% इंटरेस्ट तो नहीं होगा। क्यों 10% इंटरेस्ट नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट so that claim of 10% is not acceptable because of the reason that in case a partner has forwarded a loan to the farm, the partner is supposed to get interest at the rate 6% per annum, right? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम उसको मिलना चाहिए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। अगर एग्रीमेंट है देन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या क्या कितना मिलेगा? 6% पर एनम, ठीक है? सो द क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड, ही शुड गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन Sham's loan. Clear? Then comes the next one. Mohan has contributed 20,000 and Sham rupees 50,000 as capital. Mohan wants equal share in the profit. तो देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। सो मोहन क्या बोल रहा है? मोहन ने कितना दिया है कैपिटल? 20,000 कम दिया है। शाम ने कितना दिया? 50,000 दिया है, ज्यादा दिया है ना? तो अब मोहन बोल रहा है कि इक्वली प्रॉफिट शेयर करना है। एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इसी के लिए वी कैन से दैट मोहन इज राइट, मोहन्स argument is right that the profit should be shared equally because in the absence of partnership deed, the partnership act says that profit should be shared equally. Clear? बच्चों इसका नोट कर लेना। okay, please make a note of every point. This is short questions. As I am describing the answers, you please make the note also. Then comes next one. Sham wants interest on capital to be credited at the rate 6% per annum. शाम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शाम इज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% per annum. So is his demand or desire acceptable? No, because in the absence of partnership deed, no interest on capital will be allowed. So Sham will not be allowed any interest on capital. ठीक है? Now, there's a second question given, whether the following statement are true or false. First is, valid partnership can be formulated even without a written agreement between the partners. So this is right, isn't it? Because a partnership agreement can be written as well as oral. So without a written agreement also a valid partnership can be formed. Okay? Then so it is true. Coming to the next one, each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of all other partner. So वो लोग मालिक भी होते हैं और सब एक दूसरे से related भी होते हैं. So this point is also correct. This is also true. Then coming to the next one, maximum number of partners can be 50. Yes, that is also true. According to central government, the maximum number of the partner that is set is 50. Although the Companies Act has given the option of 100 also, but presently it is 50 according to the central government. Now coming to the next one, method of settlement of dispute among the partners can't be a part of partnership deed. No, that is false. That is not true, because all the ways of settling the dispute among the partners is given in the partnership deed. Okay, yes, but one at a time you can say that if there is any such things which is not written in the partnership deed or it is not present in the partnership deed, it is also present in the partnership act. So sometimes it can happen that without the partnership deed also a dispute can be settled.
Okay, but remember that method of settlement of dispute among the partner is a part of partnership deed. Okay, how the dispute will be settled, it is a part of partnership deed. Okay, so this is true. Now coming to the next one. Okay, so before we go to the next page, I hope this is clear. The first three is true and the last one is false. Okay, this is not true because partnership deed is always having the option of method of settlement of dispute among the partners also. Then the next one, if the deed is silent, interest at the rate of 6% per annum would be charged on drawings made by the partner. No, this is false because interest at the rate of 6% per annum will be only given on interest on will be given for the partner's loan, right? Other than that, no other interest, salary, commission, anything will not be given. So this is false. Then interest on partner's loan is to be given at the rate 12% per annum if the deed is silent. This is also false because we have just now told that we have just now discussed about this. The concept is that interest on partner's loan will be given at the rate 6% per annum. Okay. So that is the part here. Now we'll quickly go to the capital account. We'll be seeing about that. So here is an example of a capital account, partner's capital account and partner's current account. On this we'll have a separate video and I will share a performa also with you all. We'll be seeing that. Okay, so just before going that, we'll see some more conception about the journal entries. We'll see the journal entries conception also. So uh, once once we get into this part, you just try to understand one conception, that what happens is that in case of sole trading, uh, the final account that is prepared is trading account, profit and loss account, and directly the profit or loss from the profit and loss account is transferred to the capital. We prepare the balance sheet, and in the balance sheet, in the liability side, along with the capital, we add the net profit or deduct the net loss. But here the situation is not like this. The result of the profit and loss, whatever the result is, we have to do the settlement with all the partners. Okay, whatever the result comes in the profit and loss, that will be later on settled with the partners. If there is profit, we have to prepare one more additional account named profit and loss appropriation account. Okay, अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग को और एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. But if there is loss, then the loss will be directly distributed to the partners from the profit and loss account. अगर लॉस होता है तो डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. कैसे हम लोग वो देखेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें वो नेट प्रॉफिट लेकर जाना है और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी द जर्नल एंट्री वन बाय वन. द फर्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस. पहले क्या करना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करना है, ट्रांसफर करना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, दैट इज द प्रॉफिट, to transfer the profit in the profit and loss appropriation account. Okay, कैसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस. इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोइंग, ओके दिस, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंट्री में देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर भी किया है और नेट लॉस भी ट्रांसफर हुआ है. तो नेट लॉस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो पार्टनर अकाउंट में चला जाता है. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट का देखेंगे. सो हाउ टू ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट कौन से साइड में होता है, क्रेडिट साइड में है ना. तो ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करके बंद करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट. और कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, वो वहां पे आ जाएगा. ओके, I have opened a new page where you can better see this conception of journal entry. So here it is, journal entries related to profit and loss appropriation account. Okay, so first of all we have the opening balance where the profit from the profit and loss account will be transferred to the profit and loss appropriation account, right. पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा. मैंने पहले बता दिया था कि याद रखना, अगर प्रॉफिट होता है तो ही हम लोग को एप्रोप्रिएशन बनाना है और वो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
appropriation बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation बनाने की जरूरत नहीं है. So let's see क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसफरिंग द balance of profit and loss to the profit and loss appropriation account. So what is the journal entry? Profit shows credit balance, so you have to close it. So profit and loss account के credit side में है profit, उसको बंद करने के लिए डेबिट करना है. So profit and loss account डेबिट टू कहाँ पे जाएगा ये, profit and loss appropriation account. So it will go in the profit and loss appropriation account credit side. Profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. Then comes the next one, interest on capital. So interest on capital, याद रखना, you should remember that it's a loss for the firm, right? It is a loss for the firm. So first of all, what you have to do, you have to pass a credit entry, that is giving the money to the partner. So since it is a loss of the firm, so what will happen, interest on capital will be debit. It's a nominal account, interest on capital account debit, and this money will be going to the partner's capital account. Remember that all the transaction related to partner is generally settled with the capital account. All the transactions related to partners are generally settled with the capital account, but if the question mentions the other way of settlement, we will do it accordingly. But time being, you remember that all the transaction with the partner will be settled with the capital account. So what will be the entry? Interest on capital is loss of the firm, so interest on capital account debit. Two, the money will go in the capital account or current account. What is that current account? I will tell you later. Just timing, you just remember that capital account and current account. So it will go to the partner's capital account and it will increase the capital. So since their partner is going to get the interest, so interest on capital is the loss of the firm, interest on capital account debit to partner's capital account. Since capital will increase, so the partner's capital account is credit. Then next one, for transferring interest on capital to the profit and loss appropriation account. As I told you, interest on capital account is a nominal account, so you need to close this account. How will you close it? You'll close it, since it is showing debit balance, so will you have to, how will you have to close it? By crediting it. And what will be the debit? Profit and loss appropriation account, isn't it? So it will be profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. Then coming to the next one, interest on drawings. Interest on drawings, again this time we are going to get, who are we? The farm will get the interest from the partner. So when the farm gains, so it will be credit, interest on drawings will be credit. And as I told you, where we are going to transact, where किसके साथ हम लोग transaction करेंगे? partner account के साथ. partner का transaction हम लोग किसके साथ करेंगे? capital के साथ. So we will take this money from the capital. That is why, since we are taking the money, so capital will decrease, isn't it? Capital shows credit balance. So to decrease the credit balance, you have to debit it, isn't it? So partner's capital account will be debited to interest on drawings account. Okay? Partner's capital account debit to interest on drawings account. Then to close the interest on drawings, how will you close it? Since interest on drawing is showing credit balance, you debit it. So interest on drawings account debit, and the money will be shown in the profit and loss appropriation account credit side. So interest on drawings account debit to profit and loss account appropriation account. Then comes the next one, partner's salary or commission. When we are paying partner's salary or commission, the treatment will be same. Okay, for both the cases. First thing, partner's salary or commission. What will be that? It is a loss for the firm, so it will be partner salary account debit or commission account debit, right, to partner's capital account or current account. Okay, so since it is a loss, so it will be debit, isn't it? So partner, like interest on capital, okay, same like that, salary or commission to the partner will be debited and the partner's capital will be increasing, so it to partner's capital account or current account. I'll tell you what is the what is the difference between capital and current account in the later part. So then coming to the next one, we have to close this salary or commission. How to close it? Since it's in the debit side, to close it you have to credit it. And what will be, where it will be transferred? Appropriation. So profit and loss appropriation account debit to salary to partner or to commission to partner. Okay, clear? Now coming to the next one, profit transfer to reserve. How to transfer the profit to the reserve? See, there are some certain situations where the partner
कीप अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर क्या करता है, एक प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करता है, उसको रिजर्व में रख देता है ताकि वो फ्यूचर में यूज किया जाए, ठीक है, इट विल दे विल कीप इट इन द रिजर्व सो दैट दे कैन यूज इन द फ्यूचर. So when they keep a part of the profit in the reserve, how the entry will come is that profit and loss appropriation will be debited, right? Profit and loss appropriation account will be debited, and this money will be transferred to reserve. So to reserve account, ठीक है? Profit and loss appropriation से काटना है पैसा, so इसी के लिए profit and loss appropriation debit होगा और पैसा चला जाएगा कहाँ पे? रिजर्व में, इसी के लिए टू रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी रहता है, हाउ टू सेटल इट, हाउ विल इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. जो भी प्रॉफिट बच गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. सो हाउ विल यू पे इट, हाउ विल यू सेटल इट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट से ज्यादा है तो बंद करने के लिए डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, ठीक है, और पार्टनर को ये प्रॉफिट मिलेगा इसलिए कैपिटल बढ़ेगा, इसी के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया. देन कमिंग टू लास्ट वन, दैट इज शेयर ऑफ लॉस. अगर लॉस होता है, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं आएगा, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, वो मैं बताऊंगा. अगर, ठीक है, वो अलग चीज है, उसके बारे में हम लोग बाद में डील करेंगे. अब ये सिचुएशन आता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, देन हाउ विल यू सेटल इट? You have to transfer it, isn't it? Loss means profit and loss account is debit. So to close that profit and loss account, you have to credit it. So profit and loss account will be credited, isn't it? Profit and loss account will be credited. Then what will be in the debit? What will come in the debit? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होकर बंद हो गया, तो डेबिट में कौन जाएगा, कौन बेयर करेगा लॉस? पार्टनर लोग, है ना, पार्टनर लोग बेयर करेंगे. दैट इज वाई पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? सो दिस इज हाउ the journal entries will be coming for this part, right? In the next video I'll add up more of the knowledge about this chapter. We'll keep only this much for this particular video. All of you are required to make the journal entries of all this as well as solve the sum that I have discussed in the beginning of the class. Okay, that is the work. And in the next video we'll be discussing more on this chapter. We'll be learning more of the practicals. So please learn this journal entry and remember this journal entry properly because it will be required and it will be very important for you all. Okay.